हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 चैप्टर नंबर 11 दैट इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। सो लेट्स कंटिन्यू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस इन द ज्योमेट्री। सो first we are going to start with collinear points. What are collinear points? We said points that lie on the same line are said to be collinear points. For example, you can see in this figure on your screen that A, B, C all are lying on the same line. ये तीनों points हमारे same line पे है, that is why they are said to be collinear. Collinear, see इसके अंदर हमारा word आ रहा है line. दैट मीन्स वी कैन हैव अ हिंट ऑफ रिमेंबरिंग कि कोलिनियर को कैसे रिमेंबर रखेंगे। जब वो हमारे सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे देन दे आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स। एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दैट मीन्स जो लाइन पर नहीं आ रहे होंगे लाइन पॉइंट्स। So points that do not lie on the same line are said to be non-collinear points. For example, you can say ABC. हम AB से एक लाइन बना सकते हैं, BC से एक लाइन बना सकते हैं, AC से एक लाइन बना सकते हैं, बट ABC तीनों से हम एक लाइन नहीं बना सकते. That means they are not lying on a same line. That is why they are said to be non-collinear points. Let's move further. Now we are going to understand what are intersecting lines. If two lines on a plane meet each other at one point, then they are said to be intersecting points. You can see two figures on your screen. Line PQ and RS are intersecting at point O. जब दो लाइन्स हमारी एक पॉइंट पर आके मिलेगी then they are said to be intersecting lines. लाइन L1 एंड L2 वैसे तो इंटरसेक्ट नहीं करिए बट जब हम इनको एक्सटेंड कर देंगे पीछे की तरफ देन दे विल intersect at point O. That is why they are said to be intersecting lines. Next, we are going to study about what are concurrent lines. If three or more lines intersect at the same point, जब तीन या तीन से ज़्यादा lines intersect करेगी at same point, same point नहीं होना चाहिए, different point नहीं होना चाहिए, then they are said to be concurrent lines. See, you can see in the figure line L, M, N, they all are intersecting at point P. So point P is said to be point of concurrence. That means concurrent lines जहाँ पे मिलेंगी, जहाँ पे intersect होंगी, that point will be called as point of concurrence. Perpendicular lines, two distinct lines, two different lines जब intersect करेंगी एक दूसरे के साथ at 90 degree angle और right angle are called perpendicular lines. That means जब दो lines intersect करेंगी and they are making angle of 90 degree at point of intersection, then they are said to be perpendicular to each other. AB is perpendicular to XY because AB and XY intersect each other at 90 degree angle. So when two intersecting lines intersect while making a angle of 90 degree, they are said to be perpendicular lines. Next, parallel lines. Parallel lines are the lines that do not intersect or meet each other at any point in a plane. They are always parallel and are at equidistant from each other. They are non-intersecting lines. See, अभी हमने एक लास्ट फिगर देखी थी intersecting lines में जहाँ पे हमने उनको L1 and L2 lines को पीछे की तरफ एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट करवाया था पॉइंट O पर. पैरेलल लाइंस को हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर दे दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट. They are always equidistant. Equidistant means equal and distant means distance. So these are always at the equal distance from each other. See, this distance will always be the same in case of parallel lines. तो ये वाली lines कहीं पर भी नहीं meet करेंगी. They are always equidistant from each other and these are non-intersecting lines because they will not intersect. हम इनको जितना मर्जी extend कर दें किसी भी direction में. Next we are going to see the relationship between point lines on a plane. Countless number of lines can be drawn passing through one point. See, we have point O and we can draw as many as number of lines as we want. हमने लाइन L बनाई, M, N, P, Q,
हम चाहे तो और बना सकते हैं, यहाँ से जितनी मर्जी लाइंस पास कर सकते हैं हम। सो एक गिवन पॉइंट पर हम जितनी मर्जी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, इट्स आवर चॉइस। बट फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, पर हम कह रहे हैं जब हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए प्लेन के ऊपर, वहां से हम सिर्फ एग्जैक्टली एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम दोज टू पॉइंट्स। द लाइन्स पासिंग थ्रू देम ऑल्सो completely लाइन्स ऑन द सेम प्लेन। हमने कहा पॉइंट ए और बी है, इससे पासिंग हम एक ही लाइन एल ड्रॉ कर सकते हैं, एंड हम किसी भी मैनर में कोई भी और लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते यूजिंग बोथ द पॉइंट्स। सो अगर टू गिवन पॉइंट्स है उसमें से हम एग्जैक्टली वन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एंड अगर एक ही पॉइंट गिवन है उससे हम एज मेनी एज नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एक्सरसाइज 11C. First question says, in this figure state whether the given lines are parallel or skewed. Skewed means it is intersecting lines. So first part देखते हैं AD and BC. See, AD, BC, these are equidistant, that is at the equal distance. So this line is parallel lines. Same C part देखते हैं DC and GH. DC and GH, these are also at the equal distance, that means it is also parallel lines. So you are going to do all these parts and we are going to discuss these parts in the online sessions. If you have any doubt, drop your doubts in the comment section below so that we can discuss it later on. So your home task will be, you have to do exercise 11C, question number 1, 2, 3 and 4 in your notebooks, and we will discuss your doubts in the online sessions. Till then, stay connected, take care, stay happy, and thank you so much.